Hello students, welcome to our channel. आज आम 11 CHSE and CBSE अकाउंटिंग सब्जेक्ट ट्रायल वाला चैप्टर स्टार्ट करियो जोटी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आम अकाउंटिंग डेफिनेशन से आम जानते जे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग राइट। आज आम से समराइजिंग विषय जानियो जोटा ऑलरेडी आम रिकॉर्डिंग कर सारचे जर्नल रे, देन आम क्लासिफिकेशन कर सारचे लेजर, देन आम समराइज करियो कोटे ट्रायल बैलेंस तमाने डेबिट क्रेडिट को मैच करिवा। तो वीडियो को एंजॉय देखंतु, भल लगे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फ्रेंड्स मान सहित शेयर करंतु। तो चलंतु आज डिस्कस करिवा ट्रायल बैलेंस। चलंतु अभी जानिबा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ର मीनिंग फर्स्ट जानियो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस ना। इट इज ए स्टेटमेंट prepared with debit and credit balance of ledger accounts to the test the arithmetical accuracy of the books. It is always prepared on a particular date. Okay, तो ट्रायल बैलेंस होचे स्टेटमेंट जोटा कि प्रिपेयर करे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। आम जो लेजर अकाउंट्स बनते अकाउंट्स क्लासिफिकेशन करते बहुत सारा अकाउंट बन लाइक कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स तार सब गोटे बैलेंस भरकला राइट। से जो बैलेंसटा को आम आनिकिना पुट करवा ट्रायल बैलेंस रे। सपोज कैश क्रेडिट साइड रे मोर डेबिट साइड था 1 लाख आउ क्रेडिट साइड था 80,000 तो मो बैलेंस कौ साइड था क्रेडिट साइड रे। तो सही क्रेडिट बैलेंसटा को आनिक ट्रांसफर करी ट्रायल बैलेंस को डेबिट साइड रे। ओके ठीक से कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मोर क्रेडिट साइड था 1 लाख आउ मोर डेबिट साइड किसी नाला तो मोर डेबिट साइड रे मोर बैलेंस आसला से बैलेंसटा को ट्रांसफर करके ट्रायल बैलेंस पुट करी क्रेडिट रे। तो it is a statement prepared to debit and credit balance of ledger account to test the arithmetical accuracy of the books. से बुक्स रे arithmetical accuracy हमरे arithmetical में चेक करिवो सेटा ठीक अछि ना नहीं से बैलेंस रो काई के में पुट करिवा। ओके इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन अ पर्टिकुलर डेट। केबे प्रिपेयर करो पर्टिकुलर डेट रे प्रिपेयर करा जाए। ओके तो हमें ट्रायल बैलेंस arithmetical accuracy जाने पे प्रिपेयर करते हो और लेजर डिफरेंट बैलेंस रो काने के पुट करते हो ट्रायल बैलेंस। तो इट इज अ स्टेटमेंट। ओके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन राइट। फर्स्ट पॉइंट कहूँ टू आसर्टेन द अरिथमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। आम लेजर अकाउंट्स अरिथमेटिकली चेक करने ठीक अच्छी ना नहीं, कैलकुलेशन ठीक अच्छी ना नहीं से जानापे आम प्रिपेयर करते हो। ओके आम लेजर्स बैलेंस जानापे। सेकेंड कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री। कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री आम एंट्री होची गोटे सिंगल एंट्री गोटे डबल एंट्री मैं स्टार्टिंग कही ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड डुअल गोटे होची डेबिट आउ होची क्रेडिट विथ इक्वल अमाउंट। ओके तो यहाँ जो आम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर गोटे कंप्लीट डबल एंट्री तो से आम होल डेबिट सहित होल क्रेडिट मैच करवा दरकार। थर्ड लेजर अकाउंट्स बैलेंस आम लेजर अकाउंट्स बैलेंस भी होता है जो आम लेजर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता हूँ तार बैलेंस को आम पुट करता हूँ। ओके टू हेल्प इन द प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आमर बिजनेस मेन मोटिव कौन टू अर्न प्रॉफिट से आम प्रॉफिट कौटे फाइंड कर ट्रेडिंग ऑफ पीएल अकाउंट जोटा कि आम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। तो से इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने आमको कौन दरकार ट्रायल बैलेंस। तो आम से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने आमको ट्रायल बैलेंस हेल्प करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस करते हैं लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट से डेबिट क्रेडिट आम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो। तो फाइनल अकाउंट्स थ्रू रे आम बिजनेस एक्चुअल प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन करते हो। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस जो फर्स्ट आम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जान पार आउ ये कंप्लीट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम देन लेजर अकाउंट को सी बैलेंस कर लास्ट टू हेल्प इन द प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने आमको ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है। चलतु अबिका ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट विषय जानिए आउ तार रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवा। तो ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट होची सामने रही देखो गोटे हूँ सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो आमर ट्रायल बैलेंस होची कौन ना लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट आम जहाँ भी लेजर अकाउंट बैलेंस आंटिबा ताको आम पुट करवा ना ट्रायल बैलेंस रे। जहाँ भी अकाउंट जब आमर कैश अकाउंट डेबिट अच्छी तो कैश को डेबिट पकेवा, जब कैपिटल क्रेडिट अच्छी तो कैपिटल को क्रेडिट रे पुट करिया। ये आम कौन करवा लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट तो ताको आम ट्रायल बैलेंस कही था। तो ये हूँ ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट जो गोटे सीरियल नंबर रहिबो, हेड्स ऑफ अकाउंट, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके ये गोटे क्वेश्चन अच्छे देखो द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट रीड्राफ्ट इन करेक्ट फॉर्म। ओके तो ये जो ट्रायल बैलेंस देख मैच होती 1,89,700 आमर दुटा मैच हवा दरकार तार भी मैच होती बट सी कौन कर भूल कर डेबिट आइटम को क्रेडिट पुट कर क्रेडिट आइटम को डेबिट पुट कर आम करेक्ट करवा। ओके से द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट रीड्राफ्ट इन करेक्ट फॉर्म। तो ये बहुत सारा आइटम गुड़ा देती तो ताको आम ये पुट करिया। ओके
तो फर्स्ट आम लिखी कैश इन हैंड 4100, मेसिनरी 25,000, परचेज 66,000, सन्डी डेप्टर्स 24,000, कैरेज इनवर्ड 800, कैरेज आउटवर्ड 700 से पकई ये सब ठीक अच्छे। कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड बोथ आर एक्सपेंसेस। ओके, कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज एंड परचेज, आम परचेज कला बेले जहाँ एक्सपेंडिचर कही आम कैरेज इनवर्ड कही आउ कैरेज आउटवर्ड गुड्स को सेल कला बेले जहाँ सब एक्सपेंडिचर होता है आम कैरेज आउटवर्ड बोथ आर एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट, बट से कैरेज आउटवर्ड कौन कर क्रेडिट पकड़ देती। ओके, वेजेस डेबिट, रेंट टैक्सेस डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी ठीक कर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड आम डिस्काउंट अलाउ करते। सपोज मु डेप्टर टू 10,000 रिसीव करार बट मु 9,000 रिसीव कली 1,000 रुपीज कौन कली डिस्काउंट अलाउ कली मोर लॉस, लॉस ऑलवेज डेबिट। ये डिस्काउंट भी से कौन कर क्रेडिट पकड़ देती। ओके, तो डिस्काउंट अलाउ कौन हम ना डेबिट आसो। ओके, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब आम जहाँ गुड्स परचेज करते आम रिटर्न कले किसी डिफेक्टिव था तो आम आउट कले आमर से कौन क्रेडिट बैलेंस। ओके, रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट, बट सी कौन कर रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट रे पकई। ओके, रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट रे। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स मैंने आम जहाँ सेल्स करते से आम पाक रिटर्न आसला आम पाक इन है दैट इज सेल्स रिटर्न, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट। तो सी कौन कर क्रेडिट साइड पकई ये आइटम को, तो ये आम डेबिट हवा कथा। ओके, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, बट से कैपिटल को 30,000 कौन कर डेबिट पुट कर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। बैंक ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, तो ड्रॉइंग से बोले भी क्रेडिट पकई। बैंक लोन, बैंक लोन इज ए लाइबिलिटी ताकू से कौन कर डेबिट पुट कर। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंडिचर्स गोटे डेबिट। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑलवेज डेबिट ताकू से कौन कर क्रेडिट पकई जो स्टॉक ऑलवेज डेबिट। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव आम डिस्काउंट रिसीव कले आम इनकम है गेन है तो गेन ऑलवेज क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव टाक से डेबिट पकई। तो ये सब आइटम को से कौन कर भूल कर आम रिड्राफ्ट करवा। ओके, बट आम करेक्ट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करवा। तो फर्स्ट आम कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आमर अच्छी 4,100। ओके, नेक्स्ट अच्छी मेसिनरी, मेसिनरी अमाउंट इज 25,000। ओके, नेक्स्ट परचेस, परचेस 66,200, 66,200। सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स 24,300, 24,300। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट आम डेबिट पुट करवा। कैरेज आउटवर्ड, ओके जस्ट कहली कैरेज आउटवर्ड ऑल्सो गोटे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माने डेबिट। ओके, तो आम कैरेज आउटवर्ड को कोटे पकेवा डेबिट, कैरेज आउटवर्ड 700। ओके, नेक्स्ट गला वेजेस, वेजेस गोटे एक्सपेंडिचर तो वेजेस डेबिट 17,500। रेंट एंड टैक्सेस गोटे एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट, रेंट एंड टैक्सेस 5,300, 5,300। सन्ड्री क्रेडिटर इज ए लाइबिलिटी तो क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर इज 17,000। ओके, डिस्काउंट अलाउड आम डिस्काउंट अलाउ कले आमर लॉस है, डिस्काउंट अलाउड आम अलाउ कले आम लॉस है, लॉस ऑलवेज डेबिट 1,200, बट सी कौन करता क्रेडिट पुट करता। ओके, रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स तो रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, तो सी कौन करता डेबिट पकड़ आम क्रेडिट पकड़ा 2,400 रिटर्न आउटवर्ड्स। देन रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स 9,600। रिटर्न आउटवर्ड जब क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड्स इज डेबिट। क्या रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, मो पाक गुड्स रिटर्न आसूची। ओके, तो इन हूँ 9,600। ओके, नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल अमाउंट इज 30,000। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, जहाँ भी हमें पर्सनल यूज में ड्रॉ करते हो तो आम कौन करते हो ना ड्रॉइंग्स करते हो, तो ड्रॉइंग्स अमाउंट होची 6,300 ऑलवेज डेबिट बैलेंस, बट सी कौन कर क्रेडिट पुट कर। ओके, बैंक लोन,
बैंक लोन जे लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट 10,000 ओके लोन ऊपर आम इंटरेस्ट पे कले आम जो बैंक लोन बोरो करके आनते आम तापर इंटरेस्ट पे कले तो इंटरेस्ट जे एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट इन नॉमिनल अकाउंट ओके तो इंटरेस्ट ऑन लोन आम 1500 लोन पेमेंट करछे नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज डेबिट ओपनिंग स्टॉक 26,200 बट सीटा को क्रेडिट पके दीजिए सेल्स ऑलवेज क्रेडिट 1,28,700 नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड ओके डिस्काउंट रिसीव अमाउंट 1,600 आम डिस्काउंट रिसीव कले तमाने आम जो क्रेडिटर्स को किसी पेमेंट कले सी आमको डिस्काउंट अलाउ कला तमाने आम रिसीव करछे तो आम सपोज 10,000 दबार था आम 9,000 पे कले कहीं क्विक पेमेंट कले बोले सी आमको डिस्काउंट अलाउ कला आम रिसीव कले तो आम गेन है इनकम ऑलवेज क्रेडिट तो डिस्काउंट रिसीव हो क्रेडिट बट सी को डेबिट पकईला 1,600 तो सब एक आइटम को आम पुट कर ट्रायल बैलेंस तो यहाँ आमर कौन थी रंग ट्रायल बैलेंस था आम करेक्ट फॉर्म रे पुट करवा देन आम टोटाल करवा बोथ डेबिट क्रेडिट को आम टोटाल कर दुटा का मैच हो दरकार बट इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट कौन कर दुटा का अमाउंट पुट करके मैच कर बट आम अबिका करेक्ट फॉर्म रे रेकर्ड कले तो आर टोटाल करवा डेबिट क्रेडिट टोटाल ट्रायल बैलेंस को ना लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट तो डेबिट को आम टोटाल कर लिख क्रेडिट को भी टोटाल कर दरकार तो आदिया में जना पड़ो लेजर बैलेंस ठीक अच्छे ना नहीं 4,100 प्लस 25,000 प्लस 66,200 प्लस 24,300 प्लस 1,800 प्लस 700 प्लस 17,500 5,300 1,200 9,600 6,300 1,500 प्लस 26,200 मोर डेबिट टोटाल आसी 1,89,700 1,89,700 अब क्रेडिट टोटाल लिखा 17,000 प्लस 2,400 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 1,28,700 प्लस 1,600 ओके 1,89,700 1,89,700 ओके तो ये थी मोर लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट मोर ट्रायल बैलेंस मैच है एचबी से जो इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट प्रिपेयर करता सी भी 1,89,700 टोटाल करता बट किसी आइटम डेबिट आइटम को क्रेडिट पकेटला क्रेडिट आइटम को डेबिट पकेटले से आम कौन कले करेक्ट फॉर्म रे रेकर्ड कले तो ये ट्रायल बैलेंस चलो अबिका आउ गए ट्रायल बैलेंस प्रॉब्लम सॉल्व करवा फ्रॉम द फॉलोइंग इनफॉरमेशन ड्रॉ ऑफ ए ट्रायल बैलेंस किसी अकाउंट्स देछि और तार अमाउंट देछि लाइक कैपिटल 1,40,000 परचेज 36,000 डिस्काउंट अलाउड 1,200 कैरेज इनवर्ड्स 8,700 कैरेज आउटवर्ड्स 2,300 सेल्स 60,000 रिटर्न इनवर्ड 300 रिटर्न्स आउटवर्ड 700 रेंट एंड टैक्सेस 1,200 प्लांट एंड मशीनरी 80,700 ओपनिंग स्टॉक 15,500 सन्ड्री डेब्टर्स 20,200 सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 इन्वेस्टमेंट 3,600 कमीशन रिसीव्ड 1,800 कैश इन हैंड 100 कैश एट बैंक 10,100 मोटरसाइकिल 34,600 एंड क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड 20,500 ओके तो अबिका ये सब अकाउंट्स को लेकिन आम कौन कर ट्रायल बैलेंस पुट करवा आम जाने कैपिटल क्रेडिट एसेट्स ऑलवेज डेबिट लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट इनकम ऑलवेज क्रेडिट एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट जोटा कि आम क्लियर CLEAR ओके तो से फॉर्म आम पुट करवा ट्रायल बैलेंस को गोटे लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट प्रिपेयर करिया तो फर्स्ट आम कर कैपिटल अमाउंट अच्छी 1,40,000 कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट कैपिटल 1,40,000 राइट परचेज ऑलवेज डेबिट परचेज 36,000 नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड आम डिस्काउंट अलाउ कले अलाउ मैंने आमर लॉस ऑलवेज डेबिट डिस्काउंट अलाउड इज 1,200 ओके देन कैरेज इनवर्ड एक्सपेंडिचर्स परचेज कला बेले जहाँ भी आम एक्सपेंडिचर करता ताको आम कैरेज इनवर्ड करता 8,700 कैरेज आउटवर्ड 2,300 सेल्स कला बेले आम जहाँ भी खर्च करता ताको आम कैरेज आउटवर्ड कहता ओके कैरेज आउटवर्ड 2,300 कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड बोथ आर एक्सपेंडिचर्स ओके सेल्स ऑलवेज क्रेडिट सेल्स अमाउंट is 60,000 okay next
रिटर्न्स इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न आम पाक गुड्स रिटर्न आसला आम जो कस्टमर को सेल करते से किसी रिटर्न कला दैट इज सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट तो रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड 300 ऑलवेज डेबिट रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट जोटा कि परचेज रिटर्न आउटवर्ड 700 ओके नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस गोटे एक्सपेंडिचर रेंट एंड टैक्सेस 1200 नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी गोटे एसेट्स ऑलवेज डेबिट प्लांट एंड मशीनरी amount is 80,700 opening stock 15,500 sundry debtors मैंने आम जो कस्टमर को क्रेडिट रे सेल करचे तो से कस्टमर हमको पैसा देवार अच्छे तो हमारा प्रॉपर्टी सन्ड्री डेब्टर्स इज एसेट 20,200 सन्ड्री क्रेडिटर्स आम जहाँ किणिकी आनचे गुड्स परचेज करचे क्रेडिट रे से आमर क्रेडिटर ताको आम पैसा देवार अच्छे तो से आम लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट 12,000 ओके इन्वेस्टमेंट आम इन्वेस्टमेंट करचे तो आम प्रॉपर्टी माने एसेट ऑलवेज डेबिट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 3,600 कमीशन रिसीव करचे 1800 ओके रिसीव करचे कमीशन हमको कमीशन आसला तब आम इनकम है इनकम ऑलवेज क्रेडिट तो कमीशन रिसीव इज ए इनकम ऑलवेज क्रेडिट कैश इन हैंड 100 रुपीज आम प्रॉपर्टी तो एसेट्स कैश एट बैंक मो पैसा किसी बैंक रे अच्छी तो सेटा भी मो प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी एसेट्स 10,100 नेक्स्ट मोटरसाइकिल गोटे एसेट्स गोटे एसेट्स 34,600 ओके 34,600 नेक्स्ट लिखा है क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द ईयर जदि आम किसी गुड्स अनसोल्ड रही है ताको आम क्लोजिंग स्टॉक कही ओके तो सेटा परचेज इनक्लूड थाए तो से लिखा है नॉट एडजस्टेड जब एडजस्टेड लिखे दें तब आम कैलकुलेट करते हैं नॉट एडजस्ट मैंने आम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस रेकर्ड करूँ ना ओके तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस रे जीव ना यहाँ परचेज रे एडजस्टेड है नॉट एडजस्टेड लिखा है क्लियर तो अभी आम कौन करेंगे सब एक आइटम को पुट कले किसी आइटम को डेबिट रे पुट कले किसी आइटम को क्रेडिट रे पुट कले ओके तो आर अबिका टोटाल कर देवा पूरा डेबिट होची 36,000 प्लस 1,200 प्लस 8,700 प्लस 2,300 प्लस 300 प्लस 1,200 प्लस 80,700 प्लस 15,500 20,200 प्लस 3,600 प्लस 100 10,100 प्लस 34,600 2,14,500 मोर डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल करियो 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 700 प्लस 12,000 प्लस 1,800 2,14,500 तो अभी क्या मोर डेबिट क्रेडिट मैच है ओके सब एक आइटम को पुट कले बट आम क्लोजिंग स्टॉक को रेकर्ड कले ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक लिखाई नॉट एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस पार्ट नुहे कारण ताको आम एडजस्टेड करता ओके बुझे तो ये थी ट्रायल बैलेंस चलतु अभी का आउ गोटे प्रोब्लेम सॉल्व करिया ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉ ऑफ ए ट्रायल बैलेंस ओके किसी अकाउंट्स देछि ताको आम लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट प्रिपेयर करिबा अकाउंट्स अच्छी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 ओपनिंग स्टॉक 60,000 क्लोजिंग स्टॉक 40,000 डेटर्स 60,000 क्रेडिटर्स 30,000 फिक्स एसेट 50,000 सैलरीज 15,000 ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 सेल्स 2 लाख कैपिटल 9 लाख ओके एटी किसी डायरेक्ट एक्सपेंसेस देनी परचेज देनी ओके किंतु गोटे आइटम रही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जोटा ऑलरेडी आम स्टार्टिंग फॉर्मुला जिन
ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओके तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को से ऑलरेडी कैलकुलेट कर सारी तो आम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पुट करवा बट जितेबाला क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन थो तो आम ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस रेकर्ड करवा ना आ क्लोजिंग स्टॉक को आम डेबिट बैलेंस रेकर्ड करवा ओके तो आम छोट फॉर्मूला स्टार्टिंग जानिचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रो फॉर्मूला होची ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये फॉर्मूला ऑलरेडी आम जानिचे तो से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रे ओपनिंग स्टॉक नेट परचेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड सरचे क्लोजिंग स्टॉक को से कौन करछे माइनस कर देछि ओके सेटियो को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जेते ट्रायल बैलेंस रे देथिबो आमे ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस रे इंक्लूड करबा नै आ क्लोजिंग स्टॉक को आमे डेबिट बैलेंस रे शो करबा ओके तो फर्स्ट हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अछि मेंशन करबा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंट इज 1,50,000 ओके ओपनिंग स्टॉक को रेकॉर्ड करियो नी देन क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 40,000 डेबिट बैलेंस नेक्स्ट डेब्टर रोटे एसेट्स 60,000 नेक्स्ट क्रेडिटर्स अमाउंट इज 30,000 okay next fixed assets always debit 50,000 next salary would expenditure always debit salary is 15,000 okay next office expenses 5,000 next sales but income by revenue sales always credit 2 lakh capital always credit capital amount is 90,000 okay तो ये थिला लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट तो इनफॉरमेशन मन रखिबो जत्ते बेले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देछि अछि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दीटा का मेंशन हेछि तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रे ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी कैलकुलेट कर चरछे तो हमें ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस से रेकॉर्ड करबा नाही आ क्लोजिंग स्टॉक को हमें डेबिट बैलेंस से रेकॉर्ड सेटा को ओपनिंग स्टॉक को रेकॉर्ड कर क्लोजिंग स्टॉक को शो कर ले ओके तो अभी का आरो टोटल कर देबो 30,000 प्लस 2 लाख 30 प्लस 90 3,20,000 मोर क्रेडिट साइड्स ओके 1,50,000 प्लस 40 1,90,000 प्लस 60 2,50,000 प्लस 50 3 लाख प्लस 15 3,20,000 तो मोर डेबिट क्रेडिट मैच है ओके तो ये थिला ट्रायल बैलेंस बा लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट आई होप आप वीडियो भल लगी आ किसी वैल्यूएबल इनफॉरमेशन प्रोवाइड करथिबो आज वीडियो माध्यम रे हमें ट्रायल बैलेंस चैप्टर को डिस्कस कले और त्या रिलेटेड किसी प्रॉब्लम सॉल्व कले जदि ए रिलेटेड आपन कोई डाउट थबो तो मते कमेंट सेक्शन में पचार परिबे आज वीडियो में हमें ट्रायल बैलेंस चैप्टर को एंड कले आर नेक्स्ट वीडियो रे हमें आर नेक्स्ट चैप्टर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर विषय डिस्कस करिबा थैंक यू।